फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and Ajinkya Rahane led Mumbai have created history. They won the 42nd Ranji title, defeating Vidarbha in the final of this season. Well, to talk more about this, I have with me Kanav Bali joining live from Mumbai and will be shortly joined with Avasthi and Suramya Kaushik. Kanav, what a win! सुबह लग रहा था एक बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं there can be a twist in the tail, but Mumbai bowlers making a comeback, and what a comeback! Absolutely, yeah. At one point of time, Mumbai would have panicked the wicketless. पहला स्टेशन विकेटलेस जाए तो यार हल्का सा पैनिक आ जाता है, but then it's the खड़ूस मुंबई as our thumbnail says, and they know how to fight back. और एक विकेट की देर थी सौम्या, जहां अक्षय वाडकर या हर्ष दुबे में से एक विकेट गिरती वो आपको कोलैप्स और पैनिक दिखता। जैसे ही अक्षय वाडकर आउट हुए, वो भी 102 पे आउट हुए, उसके तुरंत बाद आपको पता है हर्ष दुबे भी गए, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन भी हिल जाती है। आपकी पार्टनरशिप चल रही है, एक बैटर जैसे ही आउट हो उस पार्टनरशिप में उसी वक्त दूसरी की कंसंट्रेशन हिलती है, एंड देन एक विकेट एक लाइन में आती है। और जब 5 विकेट डाउन पे ऑलरेडी डे रिज्यूम किया है आपने, आपके पास बैटर नहीं है आगे खेलने के लिए। आदित्य भी जो सरवटे आए वो भी इंजर्ड थे, बैक स्पैज्म से 2 दिन से बाहर बैठे थे, तो उन्होंने कोशिश की अपनी, लेकिन देन अगेन वो कोलैप्स होना वाज इनएविटेबल। And Vidarbha tried really well. You have to give it to them the way they batted, especially in this session. And then Karun Iyer और अक्षय वाडकर की जो partnership थी, that was really good. But then again, this is the Mumbai we talk about, and they have won their 42nd Ranji title, a big achievement. मुंबई पे बाद में आऊंगा, बट अक्षय वाडकर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फैज फजल ने बिफोर द क्वार्टर फाइनल्स ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट, उसके बाद टीम को दोबारा उस वे में लाना एंड टू द फाइनल्स। उसके बाद फाइनल में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देने, आप स्पेशली जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग्स में परफॉर्म करा था। व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज कैप्टेंसी एंड हिज बैटिंग? अमेजिंग यार। See, as a captain, the main thing you want to do is lead from the front, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें रहाने नहीं कर पाए मुंबई के लिए विद द बैट। इस मैच में उन्होंने फिर भी 73 मारे। आपको एज ए कैप्टन यू ऑलवेज हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ताकि आप में खुद भी कॉन्फिडेंस आए और आप टीम के लिए एग्जांपल सेट कर सके कि आई स्कोर रन्स, and this means you can also score runs. We can do good, and that's exactly what Aditya did here. Till the time he was on the crease, Vidarbha believed they had a belief that we might be able to pull this off, which is the mammoth 538 target. But they tried their best, and Aditya, see, he was ahead of the Ranji final. He came for the PC. He was really calm, relaxed, and he was looking really confident. और एक देख के लगता है तेरा young player देखने में एकदम ऐसे calm, composed, but the confidence that guy has in himself. It's really commendable. On that note, I'll also welcome Taus bhai to the show. Taus bhai, Mumbai जीत गई, खुश तो बहुत होंगे आप। फाइनली वो टाइटल आ गया जिसकी दरकार थी, कुछ सालों से दरकार थी, कुछ एडिशन से नहीं, बहुत टाइम से मुंबई वर सर्चिंग फॉर दैट टाइटल, एंड अजिंक्य रहाणे once again the man leading as a captain, leading from the front, and he has a Ranji title as well. What do you have to say? Absolutely, what a beautiful moment it must be, like for the dressing room and for the whole Mumbai fans. I mean, रणजी ट्रॉफी में नॉर्मली आपको भीड़ देखने नहीं मिलती, मगर आज आप वानखेड़े स्टेडियम जाइए तो आपको एक बज देखने मिलेगा। फैंस का जो क्रेजीनेस है, पैशन है, फैंस स्टेडियम में तो है, सोशल मीडिया पे भी जबरदस्त है। आई मीन, नॉट मेनी पीपल कुड गो बिकॉज ऑफ इट्स अ वीकडे, थर्सडे है, मगर आप फॉलो करें सोशल मीडिया पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बिग मोमेंट। आई मीन, मुंबईकर्स हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, एक आईपीएल होता है टाइटल और एक रणजी ट्रॉफी। तो भी हमारे लिए लेगेसी है, हमारे लिए इतने साल बिल्ड अप किया है 41st टाइटल से। उसके बाद एक ड्रॉट हो गया था, एक ड्राई रन हो गया था, जिसके लिए हम बहुत डेस्परेट थे एज ए मुंबईकर, मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए काफी समय से वेट किया था, और आज 42nd टाइटल आके जबरदस्त एक ब्यूटीफुल मोमेंट, एक और हिस्ट्री क्रिएट हो गई। और जिस तरह से ये मैच हुआ, आई मीन, आई वुड लव टू गिव क्रेडिट टू द विदर्भा साइड, द वे दे फॉट। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, आई मीन, मुंबई के लिए, बट क्रेडिट टू दीस गाइस, तनुष, कोटियान। आई मीन, लुक एट द वे दिस गाय धवल कुलकर्नी, इट वाज हिज लास्ट गेम। हमारी लास्ट में बातचीत हुई थी, आपको बताया था पिछली बार भी कि भाई हाउ डू यू सी द लास्ट गेम? बोले पता नहीं, आई डोंट नो, लेट्स होप समथिंग कम्स आउट इन माय लास्ट गेम। और इनका चांस भी नहीं था खेलने का,
कनव Yeah. बताएंगे आपको डिटेल में, इनका मौका भी नहीं था, ये तो किस्मत थी इनकी कि इनको खेलने मिल गया ये लास्ट रणजी ट्रॉफी फाइनल, व्हाट अ फिटिंग एंड टू अ करियर। और लास्ट में जब विकेट निकाला है, I mean, he was walking away with the ball as if he's taking a 5 wicket haul, and he deserved it. He deserved Yeah. it for the, for his career that he's gone through. I mean, the way he's gone, True. he could have played for India longer, but सबको सब कुछ नहीं मिलता. But then at the end of the day, Ajinkya Rahane, he will be very, very happy as a captain to have won this Ranji Trophy title. I think it's for the first time that he's won a Ranji Trophy title as a captain. एज ए Yeah. प्लेयर उन्होंने बहुत जीता है, कप्तान। फिर आप देखेंगे ये यंगस्टर्स, मुशीर मुशीर का 100, फिर different every character, Shreyas Iyer, the way he was coming from a situation where a lot of questions were raised, again he's gone back because of back injury. अजिंक्य रहाणे पर सवाल थे, शम्स मुलानी काफी समय से खेल रहे थे, उनको उन्होंने कप्तानी भी की थी लास्ट ईयर, उनको नहीं मिला टाइटल। Hmm. फिर यहाँ पर तनुष कोटियान एक यंग ऑफ स्पिनर आ रहे हैं, जिनको देखा जा रहा है क्या ये नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, बट देन फाइनल में उन्होंने एटलीस्ट ये बता दिया कि आई एम देयर, आई एम वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है मुंबई का, एंड व्हाट अ फिटिंग मैच एंड एंड टू अ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन। मतलब फिटिंग क्यों पता है, क्योंकि मुंबई जब टाइटल जीतती है, खत्म करती है सीजन ऐसे, तो एक जबरदस्त सीजन हो जाता है एक मुंबई क्रिकेट के लिए होलसम। बट Yeah. मुंबई इंडियंस के लिए भी आना टाइटल, अब वो प्रेशर आ जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए कि यार रणजी ट्रॉफी जीत गए, अब हमें आईपीएल टाइटल भी जीतना है। Yeah, true. But Kanav, talking about Vidarbha's fight back, कहीं ना कहीं you have to give it to them. 500 से ज्यादा का टारगेट आप चेस कर रहे थे, 105 100 से थोड़े से ऊपर पे आप पहले इनिंग में निबट गए थे, उसके बाद इस तरीके का फाइट बैक पुटअप करना, जब अपोजिशन टोटली आपको डोमिनेट कर रही हो, बॉलर्स एक के बाद एक आपके आपके अपोजिशन में ऐसे बॉलर्स हो जो कभी भी विकेट निकाल सकते हैं। कल बहुत परेशान करा है, फिर रिमेंबर दैट ध्रुव शौर्य विकेट, उस बॉल ने दिखाया था कि पिच में जो जो है दरारें वो कैसे खुलने लगी। बट हैट्स ऑफ टू देम, व्हाट डू यू हैव टू से? Absolutely, yaar, and I still believe had Karan Nair been not out overnight, Mumbai would have panicked रात को सोते, क्योंकि उनको होता है Karan Nair and Akshay Wadkar is on the crease, anything can happen. And Karan Nair in the post day press conference said the exact same thing. He said कि अगर मैं आउट ना हुआ होता तो मैं आपको और बेटर आंसर दे पाता कि कल हम क्या चेस करते हैं, चेस कर सकते हैं कि नहीं। आई वुड हैव लव्ड अगर मैं नॉट आउट रहता, हम फिर कुछ, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है अपनी बैटिंग पे, वो इतने बड़े खिलाड़ी है, लंबी इनिंग्स खेलना जानते हैं, तो वो टर्निंग पॉइंट था उनकी विकेट जो कल गिरी। फिर देन अगेन आज जो अक्षय की विकेट गिरी सेकंड सेशन में, दैट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट। बट थ्रू आउट दिस द पार्टनरशिप दैट दे हैव बिल्ट, द सेंचुरी बाय द कैप्टन, इट शोज, यार द स्कोर कार्ड शोज दे फॉट, द स्कोर कार्ड सेज इट फॉट। कल जो ऑल आउट हमें लग रहा था, कल पहली बॉल से 10 for 0 पे उन्होंने स्टार्ट किया, तो दे हैव लिटरली प्लेड 4 सेशंस, 4 सेशन दे सर्वाइव एंड दे ब्रॉट द टोटल बिलो 200। 538 का वो 200 के नीचे ले आए, बट अनफॉर्चुनेटली 538 वाज अ लॉट यार, बहुत बड़ा नंबर है, वो चेस करना मुश्किल होता है, और वो दिख गया। मुंबई हैड टू विन एंड दे हैव। ओके, बट वो जो डिफरेंस है ना रन्स का, वो बहुत ज्यादा नहीं है। अंडर 170 इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर विदर्भा, आई वुड से। बट एंड ऑन दैट नोट, I'll also welcome Suramya to the show. Suramya, what do you make of this win? 42nd title. Ajinkya Rahane leads Mumbai to a Ranji title in front of the home crowd. हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा were there watching this game, not today, but वो इस फाइनल को देखने आए थे, उन्होंने अपनी प्रेजेंस मार्क करी थी, and Mumbai stamping their authority. What do you have to say? Well, first of all, I want to know from you if you can see me and hear me because my connection is so unstable. I could barely Yeah, hear. I can. Okay, but I think it's a thumping victory for Mumbai. But what a fight back from Vidarbha. As Kanav mentioned, 500 plus runs. The target looks huge. It looks like a mountainous target. And when you bat out there, you feel okay, we won't be able to put up a good show. But I think what Vidarbha has done, they have showcased their talent. They have showcased their skills. And obviously, it must be a great win for Rahane. But कहीं ना कहीं वो एक moment से कहीं ना कहीं आया होगा कि यार इतना अच्छा fight back हो रहा है. How will we able to finish this game as early as possible? And I was just looking at what Kanav was tweeting from the ground, and he was tweeting about how Vidarbha had belief in them, which is I think the most important point out there. It's not Yeah. about that they have lost. It's about
Trophy. They have lost from a huge margin, and it speaks a lot about Mumbai's efforts, the way they batted. In this whole Ranji Trophy, I remember you kind of discussing, how Shreyas Iyer is struggling, especially in this final match. And then, Yeah. those 95 odd from his bat. So that must be a good sign for him. Rahane as well. At the end of the day, he got some runs for his bat for himself. So I think that must also be a good sign for them. But all in all, what matters is how you win. And registering such a big win, it's their 42nd win, and obviously it must be really a happy moment for them. But to be very honest, I think Vidarbha deserves a lot of credit. They showed Hmm. resilience, and I think the actual match winners of the whole Ranji Trophy season, somewhere or the other, can be Vidarbha for their sheer hard work and resilience on the final match day. या ताउस भाई, थोड़ी सी बात अजिंक्य रहाणे के भी करनी पड़ेगी। जब वो बैटिंग करना उन्होंने वो पार्टनरशिप लगानी शुरू करी, थोड़ा सा ट्रिकी था सिचुएशन, बट व्हाट अ नॉक। आई जस्ट फील ही मिस्ड आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट 100 दैट कुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज हिज कॉन्फिडेंस। आई मीन a player like Ajinkya doesn't need confidence as such, but अगर No, no, 100 no. आ He जाता तो needs थोड़ा एक confidence. No, no, absolutely, absolutely. And like the way he's been struggling, yeah, the way he's been या struggling, a lot of question marks were raised, especially वो साउथ अफ्रीका सीरीज में वो वीडियो डालने के बाद सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे कि उन्होंने मतलब ही इज रेडी एंड लाइक दे आर मिसिंग हिम, बट देन उसके बाद जो उनका खराब फॉर्म चला है लगातार वो बहुत ज्यादा, एंड दिस वाज वेरी क्रूशियल। आई मीन लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर रेज्ड, criticism people were throwing started। देखिए इट्स ऑनेस्टली इट्स अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड। आई मीन सोशल मीडिया इज अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड, और वहां से ही परसेप्शन नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, और वहां से जजमेंट पे लोग आ जाते हैं, कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और उसी की वजह से आपने देखा है कि ईशान किशन का क्या फर्क पड़ गया कि वो अगर वो सोशल मीडिया पे दुबई की पार्टी का नहीं डालते तो आज क्या हो जाता। आज वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट या में रहते, तो इट बिल्ड्स अ नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ द वर्ल्ड। तो अजिंक्य रानी के लिए दिस वाज वेरी क्रूशियल नॉक। आई मीन कमिंग इनटू द नेक्स्ट सीजन इफ ही वांट्स टू प्ले एज अ प्लेयर एज वेल एज अ कैप्टन। अभी अब मतलब नेक्स्ट सीजन ही कैन स्टेक हिज क्लेम कि भाई यू सॉ माय लास्ट फाइनल नॉक, how I played, I could have gone on to make a century. I looked good. He looked good in each and every match, यस but looking good is just not enough when it comes to cricket. क्योंकि आपके पास आपकी जो लास्ट इनिंग्स होते हैं ना, you are as good as your last innings. क्रिकेट में ऐसे ही है, it's ruthless. So it's a thankless job. So you have to keep on performing at least दो मैच छोड़ के आपको एक परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ता है। और अगर आप अजिंक्य राणे एक स्टेचर के बंदे, तो आपके पास एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। तो अजिंक्य राणे के पास वो एक्सपेक्टेशन थी। So I had met him in the last semi-finals game. So I could sense something is missing. He was a bit, कनव भी थे उस टाइम, तो वो थोड़ा एनिमेटेड लग रहे थे, थोड़ा कुछ एक फील तो आ रहा था कि यार कुछ तो बंदे में मिसिंग है, कुछ ऐसा हो रहा है यार, दिमाग में कुछ ऐसा जा रहा है कि यार मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे। तो क्या आएंगे वो फाइनल में, वो अच्छी खुशी थी कि यार वो फाइनल में आ गए, और वो फाइनल में अब उनको काउंट करना था, और उन्होंने काउंट किया। He would be kicking himself that he could not get 100 despite getting a good start, despite hitting that 75. A youngster like a Musheer या who grind there, who was there, who stuck there, who was stubborn in his second inning knock. He stayed there. He played an important knock, got 100 on his first ever Ranji Trophy final. Why I couldn't get, despite looking good, despite looking so confident, dominating, बट नहीं मिला। 75 आ गया, श्रेयस अय्यर को भी मार। या सो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉक। कॉन्फिडेंस तो यार अभी आईपीएल में जा रही, देखिए ओके रणजी ट्रॉफी ओके क्रिकेटर्स Taus bhai, मुंबई Taus bhai, इंडियंस के I'll लिए quickly, रणजी I'll ट्रॉफी एक, so Taus bhai, I'll या quickly take a comment from Kanav, and because he's to go, and then I'll come back to you. Kanav, quickly your जनरेशन thoughts वीक on ना। Ajinkya Rahane, Ajinkya Rahane's knock in this innings specifically, considering जिस situation में वो he बैटिंग fought, करने आए थे। see, all we can say is he fought जो उनका फॉर्म पूरे सीजन में था, he literally fought really well, and that is something that was expected out of him कि आप पूरे सीजन में 850 मारी है, you somehow need to score another 50 or rather 100. Unfortunately 100 नहीं आई, but he really showed resilience, और बहुत क्रूशियल 73 रन थे। अगर अब आप मार्जिन देखें ना, तो शार्दुल का 75 और रहाणे के 73 उस इनिंग्स में True. वाज वेरी क्रूशियल। ऑब्वियसली अय्यर के 95 भी इस इनिंग्स में, बट इट वाज अ वेरी क्रूशियल रन। तो लेट आए, काफी लेट आया उनके लिए, बट एटलीस्ट he'll have something to be happy about, obviously apart from the trophy। पर्सनल अगर सोचे तो he'll have कि यार मैंने 73 फाइनल में मारे, so I hope this gives him confidence that he needs। Yeah, true. Okay, well, Kanav, thank you so much for joining us. You can now go and have a chit chat with with the captains. Thank you. Yeah, Taus bhai, you can
uh, I agree to what Kanav said कि कहीं ना कहीं struggle था, but you know Ajinkya has been known for scoring runs at crucial stages. He did that in Australia. He has done that for India in overseas tours, and now for his state team. So जब आया बिल्कुल perfect time पे आया. या एब्सोल्युटली नहीं, स्ट्रगल्स मैं नहीं कहूंगा। स्ट्रगल कब होता है जब आप यू आर कंप्लीटली क्लूलेस, यू डोंट नो वेयर योर बैट इज गोइंग, यू डोंट नो वेयर योर लेग इज गोइंग, यू आर बीइंग बीटिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आप खराब बॉल को भी आप नहीं खेल पा रहे हो, तो वो स्ट्रगल मुझे लगता है, मुझे मेरे हिसाब से वो होता है स्ट्रगल। बट ये बंदा ही वाज ऑलवेज लुकिंग गुड। वो मिडिल भी जब डिफेंस भी करते थे या ड्राइव भी खेलते थे, जितने भी आए रन्स उनके या थोड़े रन्स आए, थोड़े में भी वो कन्विंसिंग और अच्छे दिख रहे थे। सी इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक गुड, बट देन वो एक फेज होता है क्रिकेटर का, एक बल्लेबाज का, कि यार आप कितना भी अच्छे लगो, वो रन नहीं आते। देखिए पुजारा, आप लोग वो लेवल पे पहुंच गए, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, तो आप आंख बंद करके भी खेलोगे ना तो आप खेल सकते हो क्रिकेट, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका काउंट करने लगता है। आप देखिए ना, आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द बैट्समैन, जो ऋषभ पंत, आई मीन लुक एट द एग्जांपल ऑफ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आते ही मतलब इंजरी के बाद आ रहे हैं, 14 महीने में रिकवर हो गए। आज कल उनकी वीडियो देखा आपने, जिस तरह से वो शॉट्स मार रहे थे, वो ओल्ड ऋषभ पंत लग रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो मसल मेमोरी में उनके, तो मसल मेमोरी में इतना साल खेलने का। तो अजिंक्य रहाणे तो हैज बीन प्लेइंग सिंस लाइक मोहम्मद निसार ट्रॉफी जब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, मुंबई और सियालकोट था शायद वो मैच, तब से खेलते आ रहे थे। तब डेब्यू 100 मारे थे उन्होंने, फर्स्ट क्लास मैच था वो, जब एक नया ट्रॉफी आया था मोहम्मद निसार ट्रॉफी, तो मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम जाती थी वहां पर खेलने के लिए, और वो वहां से आती थी, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद नहीं हुआ, तो तब मुंबई जीती थी। तो तब रहाणे का डेब्यू था फर्स्ट क्लास, और उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी और इम्प्रेस किया था काफी। बट देन अब वो इतने साल से खेलते हुए आ रहे हैं क्रिकेट, तो मसल मेमोरी में बैठ जाता है कि भाई कैसा खेलने का है, बट उनके रन नहीं आ रहे थे। दैट वाज समथिंग टू वरी अबाउट। उनको भी पता है कि बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, बट रन नहीं आ रहे। अब यहाँ से आप जाएंगे, 75 उन्होंने बनाए, और विकेट वाजंट दैट इजी टू बैट ऑन। टर्न अच्छा मिल रहा था, आपने देखा तनुष भी डाल रहे थे, मुशीर भी निकाले विकेट्स, और वहां से उनके स्पिनर्स भी डोमिनेट कर रहे थे, अच्छा टर्न मिल रहा था, विकेट वाजंट इजी। बट जिस तरह से उन्होंने खेला, रन मिला, वो भरपूर कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको आईपीएल के पहले, और खास करके अगर उनको अपना फर्स्ट क्लास करियर कंटिन्यू करना है, तो ये सीजन के बाद उनको एटलीस्ट रिस्पेक्ट से देखा जाएगा कि यार ये कप्तान जीत के आया रणजी ट्रॉफी, 75 भी मारा है, ये बंदा में दम है, अभी भी आप एक और सीजन खेलो, अब आपको प्रूव करना, अब आप अपने लिए खेलो। That is what Ajinkya Rahane season was all about. Unfortunate bad form, but he looked good. He would continue on to play next season. सुरम्य I just differ a bit from ताउल भाई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो फॉर्म का जो स्ट्रगल था, he wasn't looking that good because वो कहीं ना कहीं वो हेड मूवमेंट जो होता है, जो हेड का एक जो स्टेबिलिटी होता है, वो फाइनल में डिफरेंस दिखा, जो प्लेइंग इन द लाइन डिफेंस, वो टो का जो एक पॉइंट होता है, जो आपका मिड ऑफ, और जो एक डिफरेंस होता है ना छोटा सा, कि मिड ऑफ की तरफ है या एक्स्ट्रा कवर की तरफ है, वो मिड ऑन की तरफ है या मिड विकेट की तरफ है, वो जो है ना कहीं ना कहीं वो मुझे दिखा डिफरेंस। तो थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई डिफर फ्रॉम ताउस भाई, कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे बिफोर द फाइनल। व्हाट डू यू हैव टू से? No, I completely agree, Soumya, because Ajinkya Rahane was struggling to make runs, to score runs, and it was actually explicit also the way he was batting. And I remember in one of the sessions where I was talking to Kanav, because Kanav covered this Ranji Trophy final extensively. So just before the Ranji Trophy final, I remember Kanav told me that one of the journalists asked Ajinkya Rahane about his personal form and his batting form, and he accepted that as well. And I think that's a very big thing, for because मुझे ऐसा अभी ताउस जो बात कर रहे थे कि वो कितने सालों से खेल रहे हैं, एंड आपकी एक मसल मेमोरी में होता है, but what important it is that for a big cricketer like him to accept also that you are not performing well. So he accepted that, yes, runs are not coming from my bat, but I'm trying to work hard. And as you mentioned, even in those 70 odd runs that Ajinkya Rahane made in the second innings, I remember in the first innings he made 7. Same was with Shreyas Iyer's case, he also made 7. But in the second innings, the way he was batting, the way he was timing the ball, it actually seemed that Rahane had worked. And the way he got out as well, I think वो miss कर गए वहाँ पे, and that got a slight edge. There was this faint edge जहाँ पर वो out हुए.
apart from that, आप अगर पूरा रणजी ट्रॉफी देखिए जहां पर उन्होंने खेला है, yes, it was a bit of a disappointment from his bat, but I think overall at the end of the day, right now, जब जिस जगह पे वो अब खड़े हैं, he must be thinking that at the end everything is okay, everything is fine, because the result is in their favor. But apart from batting, Soumya, I feel when you are also leading a side, right, you have to think about a lot many things. You have to think about how you lead a Hmm. team. So there are two different aspects in terms of Ajinkya Rahane. Ajinkya Rahane, the batter, obviously there were issues, as you clearly mentioned, and he corrected a few issues in the final. But as a captain, I think he did really, really well. The way you show confidence in your players, the way you Yeah. back your players. And I think backing players is something very, very important. Before this Ranji Trophy final, he was even asked about Shreyas Iyer, and he mentioned that, Shreyas is trying hard. And everybody at that moment felt, ki, oh, what is he trying hard? Because in the first two test matches against India, he didn't score well. And then, when he came for this final in the first innings, also he scored a seven. But then, which means that you have instilled some confidence in him, that he came in the second innings and Yeah. scored 95 odd runs. So I think as a captain, Rahane nailed it. And Rahane in test captaincy, I don't think so that I have to say anything more. There have been enough examples where we have seen Rahane as a captain and leading sides to victories. Tausbhai, By the that's way, why you I should also always say count the that fact. Team India missed out on a trick of not giving him the captaincy after all that Virat Kohli and जो भी वो कुछ हुआ था उसके बाद विराट के बाद शायद इनको कैप्टनसी देनी चाहिए थी in the red ball format. Yeah, But what you you can were saying also something. count on the fact that there was no Rohit Sharma, there was no Yashasvi Jaiswal, there was no Sarfraz Khan. Despite the absence Yeah. of these big shot players, I mean, they had, of course, Ajinkya Rahane was out of form, Shreyas Iyer, question mark. But Mumbai still went on to win the title, which is a great thing. So, But again, Soumya, one thing, I mean, hmm, आप इतने साल खेलते आ रहे हो, आप एक प्लेयर है जो एक मतलब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में रन बना के आया है, hmm, पूरे सब जगह उसने डोमिनेट किया, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस किए हैं, hmm, ऑस्ट्रेलिया में जिता के आया है। आप ये स्टेज पे आके उसके हेड बैलेंस या टेक्निकल एस्पेक्ट को आप नहीं सवाल yeah. उठा सकते, क्योंकि यार बंदे ने करके आया। अब ही इज No, ही so अचीव्ड इट I ऑल। just meant कि तो जो टूर्नामेंट था नहीं उसमें तो वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, बट फाइनल में ही लोग in the second innings he looked comfortable. वो I'm just drawing the comparison between the two the things. struggle was for his runs, lack of runs. रेस्ट में अगर आप देखेंगे एक एक इनिंग उठा के, जस्ट द वे ही वाज कमिंग Yeah. अबाउट इट, आई मीन बाकी कमेंटेटर्स जो एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, उन्होंने भी एक ये चीज ये ऑब्जर्व किया है कि यार बंदा अभी भी है, मतलब ही इज डूइंग Yeah. इट वेल, बट रन्स आर नॉट फ्लोइंग इन। और होता Hmm. है यार, हर क्रिकेटर के करियर Yeah. में होता है। और अजिंक्य के एक फेज में यार डोमेस्टिक में भी हो गया, इंटरनेशनल में भी हो गया, और Hmm. इंटरनेशनल में होने की वजह से उनको इंडिया के टीम में ड्रॉप भी किया गया। ही गॉट इनफ इनफ स्पेस, enough opportunities, because he's a disciplined guy, he's looked upon as a good guy, somebody who deserves that opportunity, उसको इसलिए एक्सटेंशन मिला Yeah. उतना कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स। बट वहां Hmm. पर एक बार पेज क्रॉस कर लिया आपने कि यार आपने अचीव कर लिया सब, ऑब्वियसली कप्तानी ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिला, या उनको जो अचीव करना चाहिए था, जो हम एक्सपेक्ट किए थे, उन्होंने अचीव नहीं। बट ये स्टेज पे Hmm. आके जहां पर फैग एंड ऑफ द करियर है, वहां पर बॉडी बैलेंस और बैलेंस ऑफ हेड, और इस पे सवाल उठाना थोड़ा ये So होता है। नहीं मैं सवाल नहीं उठा रहा, so I was just drawing a comparison कि whole of the tournament में जो चीज थी वो he tweaked it in the final and that gave him result. ठीक है, वो 70 I was just expecting him to score a big one, but ठीक है नहीं हुआ, मैटर ऑफ टाइम हो जाता है, कोई बात नहीं, बट आई एम जस्ट ड्राइंग दैट कंपैरिजन। बट दाउस भाई एंड Soumya, आई वुड लाइक टू आस्क यू एज वेल, दैट शोज द माइंड सेटअप, हाउ खड़ूस इज दैट माइंड सेटअप। आप इंडियन टीम में नहीं हो, आपके रन्स डोमेस्टिक में नहीं आ रहे, स्टिल द कैप्टन दैट 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 माइंड, वो जो एक बहुत इंटेलिजेंट माइंड है ना, उस वो काम एंड कंपोज, दैट लीड्स Mumbai to another title. What do you have to say about the captaincy and the mindset of that captaincy? Well, actually, before Taos speaks, Taos, because I have a question for you as well, and it's a build up to what Soumya asked.
Like Yeah. Soumya mentioned about Rahane's captaincy, and he used the word khadus. But I think every Mumbaiker, in fact, every Mumbai batter or bowler is khadus in that way. Because I'll just quickly take a few examples. You talked about Musheer Khan. He didn't get runs in the first innings. Comes second innings, he crosses 100 mark, and he makes those 135 odd runs. And he's such a youngster. You don't expect. सुरम्य मुंबई क्रिकेट में जो बैटर है वही बॉलर है और जो बॉलर है वही बैटर है. Yeah, and then you see, in semi-finals, if I'm not wrong, Mumbai were 110 for 7 or so, and came Shardul Thakur, and he made those 100 runs. Then final, those crucial runs in the first innings of the final. Shardul Thakur. Quarter finals Tanush Kotian, Tushar Deshpande. And Tushar Deshpande, yeah, you are the lower. I won't even call lower order. You are just the 10 tail 11 end. 10 11. And you are coming out of nowhere and showcasing. I think everybody must have seen that picture where both Deshpande and Tanush have raised their bat and they are smiling. I think that smile is a very Khadu smile. That smile is like, boss, you can't knock us out like that because we are here to play. Then came semi-final, then final. So I think it's something is there in the Mumbai team. I don't know what they eat, what they drink, what they go on, how they train. I think Taus will be the right one to tell us ऐसा क्या वो different करते हैं कि आज वो 42nd title लेकर बैठे हैं, and every other batter and bowler comes to the place when it's needed the most. I'll just mention one thing. उसके बाद ताऊस भाई आपसे इसका आंसर लूंगा. I was talking to Agni Chopra. Okay. He's now playing for Mizoram. He belongs to Mumbai. Has played age group for Mumbai. उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि बॉस मुंबई के क्रिकेटर का एक काम है अपने दम पे मैच जिताना है. And you have to perform to be in that 15 or 17 and then to be in that 11. Perform करना पड़ेगा. मतलब 7-8 मैच अगर खेलना है तो आपको परफॉर्मेंस देना ही होगा. Yeah, Taus bhai, you can start with your from Maidans to लेके जाते हुए एक क्रिकेटर से मैं मिला जो कनाडा शिफ्ट हो गया क्रिकेट खेलने के लिए. He couldn't play for Mumbai. He was in the age group cricket and a very brilliant cricketer. तो बोला कि it's very difficult to survive in Mumbai cricket as a क्योंकि आपको 500 तक रन बनाने पड़ेंगे. 500 मतलब आप काउंट किए जाओगे तो 500 रन बनाने पड़ेंगे आपको. एक मैच में कभी-कभी 500, एक मैच में कभी-कभी you have to stand out from the rest of the group. Very very competitive. अच्छा, I was looking at the खड़ूस meaning. Literally हम खड़ूस सुनते हैं, क्या है खड़ूस? खड़ूस मुंबई क्रिकेटर, खड़ूस बैट्समैन, खड़ूस ये खड़ूस. हम बैसबॉल सुनते हैं मगर खड़ूस का एक ये बहुत सालों से सुनते हैं. खड़ूस का मीनिंग है ग्रम्पी. बहुत ही वियर्ड है. मीन, रूड, ग्रम्पी एंड मीन. मतलब कितना नेगेटिव साउंड करता है. बट यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है. यहाँ पर है ग्रम्पीनेस नहीं दिखेगा, मीन नहीं दिखेगा. हाँ, थोड़ा रूड दिखेंगे, थोड़ा मीन दिखेंगे, थोड़ा सा ग्रम्पी नहीं दिखेंगे. मीन और रूड मतलब कीपिंग अ प्राइस ऑन योर विकेट. ये बल्लेबाजों के लिए मोस्टली कीपिंग अ प्राइस ऑन योर विकेट. आप विकेट अपनी आसानी से नहीं देंगे. आप डट के खेलेंगे, आप स्टर्बन जिद्दी हो जाएंगे. तो आपको जब आउट करना है विकेट कोई मुंबई के बल्लेबाज को, तो आपको ऐसा आउट करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के कुछ. क्योंकि मुंबई का जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आप नंबर 6 भी देख रहे हैं, वहां से भी शुरुआत हो रही. तो मुंबई का बल्लेबाज इतनी आसानी से आपको विकेट नहीं देते क्योंकि उनके खून में जड़ा हुआ है. बचपन से ही आपको सिखा देते हैं यार विकेट नहीं देने का, आपको बॉल हवा में नहीं खेलना, आपको थ्रू द ग्राउंड खेलना है. आज क्रिकेट बदलता गया है मगर आपने मुशीर का अगर रूप देखा होगा खड़ूसियत भी बोलते, खड़ूस भी बोलते, तो कैरेक्टर को बोलते खड़ूसियत. तो जिस तरह से वो इसमें भी वर्ल्ड कप में भी 19 में खेले थे, जिस तरह से वो उतना ही अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे. आप देखा है कि आप वो फॉर्म अडॉप्ट कर लिए. आपने फर्स्ट क्लास लेवल पे आए, फर्स्ट क्लास लेवल में विकेट नहीं देने का 200 रन मारे क्वार्टर फाइनल में जो आपको मौका मिला. उसके बाद 50, फिर उसके बाद आज सेकेंड इनिंग्स में आके 136 200 के ऊपर बॉल खेलते हुए 300 तक शायद गए. सरफराज देखिए, यशस्वी जायसवाल देखिए कितना मुश्किल होता है उनकी विकेट निकालना. आप फिर रोहित शर्मा देखिए, रोहित शर्मा दे देते हैं विकेट क्योंकि थोड़ा एक मुशीर played 326 balls before getting out 325 before getting out. So that is what Khadus is all about. I mean, look at Amol Muzamdar, look at Wasim Jafar, look at the great Sachin Tendulkar, फिर look at Rohit Sharma, look at Ajinkya Rahane.
आई मीन आपका नंबर 7-8 बैट्समैन तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो अपना ही बैट्समैन, वो अपने धुन में करता है, वो भी खड़ूस है अपने लेवल का। वो तो तो अलग ही ये है। जब नीचे के बल्लेबाज, हाँ, तो जब ये नीचे के बल्लेबाज इतना ही अपने विकेट पे प्राइस रखते हैं, तो बाकी वो नेचर से आता है, क्योंकि आपको बट मतलब यू कैन नॉट गिव अप इन ताउस भाई मुंबई to बैट्समैन, survive. You cannot give up. To succeed, या you cannot give up in Mumbai. So you need to be mean. You need to be rude. You need to have price on each and every wicket, whatever match you play. So that is what Khadusi is all about, and that is why Mumbai has gone on to win 42 Ranji Trophy titles. ये अगर उनमें नहीं होता, लेगेसी माधव मंत्री, वेंगसरकर, गावस्कर और उससे पहले अशोक मंकर और तो आज यहाँ आपको देखने नहीं मिलती वो खड़ूसियत, तो वो जनरेशन से चली आ रही है और ये बंदे सुनो मैं वो जो खड़ूसियत कह लीजिए, या हाउ हाउ नो, जैसे भी आपको इसको पुट अप करना है, बट वो कैप्टनसी में, एज आई सेड, कैप्टनसी में भी दिख रहा है रहाणे के, राइट? If you remember that famous Australia tour from 36 all out to winning the series with the players who were making, we had debutants in every game, we had injured players in every game, you know, and off the field बहुत कुछ हुआ था, racist comments झेले थे Indian players ने, उसके बावजूद this man didn't just, you know, retain the BGT, he won it for us as the skipper, scored runs himself, और वही चीज इन्होंने यहाँ दिखाई है, you know. कुछ सीनियर प्लेयर्स, कुछ और प्रोमिनेंट प्लेयर्स नहीं थे, बट whatever he had, ऐसा नहीं कि मुशीर भी नए प्लेयर है, मुशीर has just bursted onto the scene, backing him, he scores 100, a big one, shows a lot of, you know, talent, the mind setup, the stubbornness in the batting, plays more than 300 balls when he was required to, so that shows a lot of character को अजिंक्य रहाणे as a skipper, और वो जो खड़ूस बैट्समैन है, वो खड़ूस कैप्टनसी में भी दिखा है। Yeah. No, I think let's go to that, GABA, and let's talk about that for a little while because, if you see in that performance, there were a lot of youngsters. Shuman Gill was there, Rishabh Pant was there. You mentioned about, racist comments. Siraj was there, and you didn't have someone like Virat Kohli. And even now, if you discuss cricket and there is absence of Virat Kohli, people are like, "Oh, can this team even win because there is no Virat Kohli? There are no experienced batters. Oh, there is no Rohit Sharma. How will they win? Who will lead the team?" All big questions, right? And Ajinkya Rahane proved to be that calm guiding force. I always think Rahane is a very, like, from the outside you find him as a very calm and quiet person because he doesn't speak much, he doesn't, I would, in a positive way, I would put this cunning captain. yeah, Is that cunningness in the actually, captain? yeah, that's a Shrewd very captain, basically. Yeah. true, because from the outside, even if you see this picture, there is no wide smile on face or there is no aggressiveness on face. Yeah. Very quiet, calm look on face. And what he does at the back is what all counts. Behind the scene, that's what matters. I was just reading player of the match is Musheer Khan, player of the series is Yeah. Tanush Kotian, and Tanush Kotian. if we read the comments of these two people, I was just reading, they have given a lot of credit to Ajinkya Rahane, and that's why we are discussing a lot about Rahane right now. And you asked me this question, that khadusiyat and that cunningness is always there because he's always there with his brain. We often call Ravichandran Ashwin as a very intelligent cricketer, no doubts about that, is a very, very intelligent cricketer. But I think Rahane is also a very intelligent and a smart cricketer and a captain because he is not just aggressive on field, but very aggressive on his mind, while making plays. Now, Mushir mentioned a line that, Ajinkya Rahane was always there with me. He made me understand how to stay calm in such kind of situations. Then Tanush said that, in like, if we go a couple of years back when they were the runners up and they didn't win the title, they were constantly working to get a title. But it was Ajinkya Rahane who asked them to not let their frustration on ground and just to play the natural cricket that they have always learned in so many years. And he mentioned, how his father, how his coach, and Ajinkya Rahane are the ones because of whom he is winning this Player of the Series award today. Which means that Rahane, not only in the final match, throughout this Ranji Trophy and throughout the years, has worked with these guys, has understood these guys. And I think
जब तक आप किसी को अच्छी तरह से समझते नहीं हो, आप तब तक उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो ऑन फील्ड। सो फॉर अ कैप्टन आपको अपने प्लेयर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड ओवर द इयर्स आई थिंक हमने सारी अलग अलग सीरीज में देखा है। इफ यू टॉक अबाउट समवन लाइक MSD कि वो इतने सक्सेसफुल कैप्टन कैसे रहे हैं, पीपल ऑफ्टन हैव मेंशन दैट MSD नोज एवरीथिंग अबाउट अ प्लेयर, कि उनके टीम में कितने खिलाड़ी हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, मुझे यूज करना है। And I think वैसे ही अजिंक्य रहाणे has also captained this, and that's why he is there with the trophy, you know. क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होता कि मुझे अपने बॉलर्स को, मुझे अपने बैटर्स में कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आना है, उन्हें गाइड कैसे करना है, तब तक आप नहीं जीत सकते थे। एंड वन शॉर्ट कमेंट ऑन यू नो द वे ही बैटेड, आई थिंक इट ऑल अगेन गोज टू दैट पॉइंट कि जब आपको फाइनल से पहले मीडिया 10 बार पूछती है कि तुम्हारी फॉर्म कहाँ है और तुम क्या कर रहे हो, एंड ही गिव्स यू अ वेरी पीसफुल आंसर that you know I'm just working on it, and I'm just trying to get runs, and then you come in the second innings and made 70 odd runs, which means that he was silently working on it, and finally, if not a big score but a decent score, he managed to make No, it the final. that was a very important knock, so to say, for the team, because they were in a spot of bother. Mumbai were in a spot of bother in the second innings. They had lost a couple of wickets, not in a spot of bother actually, but 2 wicket बहुत जल्दी निकल गए थे. And on that note, I have Vineet Ramakrishnan joining me in this live session. Vineet, am I audible to you? Vineet, am I audible to you? There's some technical issue with Vineet. Okay, Taus bhai, coming to the man of the movement also, Shreyas Iyer, जिसकी बहुत सारी बातें हो रही है, and I've heard his back is in some bother. His back is bothering him a bit again. Is he gone for a scans or what? यार ऐसा तो आई मीन दैट इज व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम एवरीवेयर लाइक द बैक स्पैज्म. अच्छा बाय द वे ही वाज सीन ऑन टीवी राइट नाउ. ही वाज डांसिंग एंड जंपिंग एंड यू नो विद द एंजॉयिंग विद वन स्टंप इन हिज हैंड. सो या आई मीन सी या look at the thing na. Again that back spasm has recovered for Shreyas Iyer. तो ये सवाल फिर से उठ जाता है, क्या वो रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल जो मिस किया था उन्होंने, क्या वो जानबूझ के मिस किया था कि उन्होंने, मतलब वो सीरियस इंजरी थी बैक स्पैज्म. अब ये सवाल फिर से जाएगा क्योंकि दिस ही वाज क्लियर्ड बाय एनसीए. एनसीए सेंट अ मैसेज कि भाई ही इज, फिर देन ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. फिर अगेन ही प्लेड द सेमीफाइनल्स एंड ही प्लेड द फाइनल. अब फाइनल में खेलने के बाद एक 95 मानेगा, फिर ये ड्रेसिंग रूम में चले गए, फिर ही वाज नॉट बैक स्पैज्म वापस आ गए. तो सवाल बहुत सारे उठ गए, बेचारे का कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया. So I think they need to introspect exactly what exactly went wrong, or ये serious. If it's a serious issue, then I think BCCI has to deal with it. कि क्या सही था, क्या ये प्रॉब्लम था, क्या रिपोर्ट सही आई थी एनसीए से, या he is just faking it. I don't know. But yeah, honestly, अगर देखें तो नहीं करेगा because player, हाँ obviously वही तो, हम यहाँ से बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, मगर प्लेयर के ऊपर है exactly कि वो क्या फील कर रहा है. So that is something that we have to take players view, और कितना ऑनेस्ट है बंदा प्लेयर वो, क्योंकि he will only be able to tell कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है. So that is something of worry. I mean a lot of question marks will be raised from here on. यार इंजरी बार बार वापस आ रही है तो मसला क्या है, कहाँ पर हो रहा है, वो एक इशू तो डेफिनेटली बनता ही है. Yeah. And on that note, I'll also welcome Vineet Ramakrishnan. Vineet, am I audible to you? Yes, you are. Yeah. Okay. What do you make of this win? First of all, record win, 42nd title under Ajinkya Rahane, with captain scoring a very important 70 odd in the finals. What do you make of this? It's not a record win. It's a record extending win. Record already had with Mumbai for a long time. It's a record extending win, not a record win. And yeah, I mean, you start off with Ajinkya Rahane. He didn't have the best of season with the bat, but when it mattered the most, he put his hands up. More than his batting prowess, it was his captaincy. The last 2 days that you saw that would probably help Mumbai more than anything else. And as you mentioned, apart from Rahane, I think this final belonged to Musheer. The way he played,
That second innings 136 was very, very crucial. I mean, to see everybody else apart from an Iyer or a Musheer found it difficult to get going. And Iyer, you would expect being an India player, having had the experience of batting in these kind of conditions, in these tracks. But for Musheer to come in, the youngster playing his fifth first class game and to show the kind of gumption that he showed, that was a bedrock of the win, to be honest. And he came in with the ball in the second innings, got the wickets of Karun Nair and Aman Mokhade, the number 3 and number 4 for Vidarbha. Again, a clutch player, and this is probably Musheer's finest hour, as for his young career. And as his brother had mentioned to him, that this is where your cricket has started, and it has started on a very good note. But to be honest, Mumbai were definitely the overwhelming favourites heading into it. I thought it would be over in the first session itself, but kudos to Vidarbha. They knew how to fight back. Akshay Wadkar scoring 100. This is his second 100 in a Ranji final. Way back when they won against Delhi, he also scored 100. So really, it turned out to be a very, very good game. By the end of the first session, I was thinking it could be a miracle happening. It could be we were talking about a miracle man in Rishabh Pant, and all those keyword of miracle was being used a lot. I thought this could be one of those games, but then again, that's what happens in these kind of games, right? One wicket, that Tanush Kotian wicket to Akshay Wadkar, was probably the moment where the game was sealed from Mumbai's point of view. Overall, look, they had a very, very strong team. Good farewell for somebody like a Dhawal, Kulkarni, Shardul Thakur coming in the knockout stages, Shreyas Iyer coming in during the knockout stages. So, overwhelming favourites Mumbai, and deserved to win, I would say. Yeah. And you were talking about Ajinkya Rahane's captaincy, but I have a comment here from Ravi Shankar, who is differing from you on this Mumbai one. But Rahane's captaincy have been very defensive. What do you want to say about this, Vinith? Mumbai won. I mean, why do you need to have a but with that? I mean, I just don't see it. I mean, अगर खोट निकालने के लिए आप कुछ भी निकालते रहोगे तो मतलब it's a never-ending discussion kind of a thing, right? You had 538 runs on the board. I mean, he could be. You could afford that defensive mindset to him. He's just waiting for things to happen, and it happened, right? I mean, he's not a mug with his captaincy. He's an India captain who won you test matches in Australia. So at least give him some credit for that, यार. मतलब हर चीज में ये नहीं होता ना कि जीत गए but हार गए but इसमें ये कर दिया but. I mean, come on, यार, seriously. True. So, what do you have to say about this comment? ये but क्यों लगाना है? I think that was the second or the third question that was asked to me about Rahane, and I mentioned this only कि अभी तो वो बहुत खुश होंगे यार जिस तरीके से उन्होंने जीता है, and at the end of the day what matters is victory, and he's got it. So why are we even over analyzing, or why are we being so harsh on Ajinkya Rahane? I think that's what Taus also mentioned. Taus ने mention किया इस slide में, अगर रविशंकर आपने नहीं सुना है to please rewind. Taus बता रहे थे कि रहाणे की जर्नी कब स्टार्ट हुई, रणजी ट्रॉफी में उन्होंने किस तरीके से खेला है, और अगर उन्होंने इस फाइनल में या फिर इस रणजी ट्रॉफी सीजन में नहीं परफॉर्म किया, happens, and at the end of the day you see that he is with the title. So what else you want? You want a title, you got a title, everybody is happy out there in Mumbai. So I think it's time for Ravi Shankar, you also to enjoy Mumbai. वैसे अगर जीतते नहीं ना, वैसे I'll tell you one thing, अगर जीतते नहीं ना तो अजिंक्य रानी की कैप्टेंसी के बारे में बातें नहीं होती। तो वो डिसमिस हो जाता। रविशंकर अगर आप नेताओं से 540 अगर आप चेस करा देते तो बात तो करना पड़ता। हाँ, वो तो हो जाता। नहीं मतलब फाइनल तक तो एटलीस्ट यार वो clutch games की बात है. I mean, if you want to look at those points where captaincy came up to that Harsh Dubey wicket was a terrific captaincy. That field placement, to have that fielder there, to bring in a Tushar Deshpande, especially for that. I mean, he did. I mean, even that Karun Nair wicket also. I mean, Karun Nair को बिल्कुल आपने stifle कर दिया था. While others, somebody like a Wadkar tried to go for his shots. काफी shots ऐसे थे कि यार बच गया था वो, but he managed to stifle somebody like a Karun Nair. That was also like decent captaincy. अच्छा, breaking news, NCA is going to give 5 crores to Mumbai team, and BCCI का तो 5 करोड़ होता ही है, 10 करोड़. Wow, that's a big amount. तो क्रिकेट भी इम्पोर्टेंट है, यंगस्टर्स अगर देख रहे हैं तो आप that's why you should focus on
playing the domestic cricket and especially Ranji Trophy. This is a message to all the youngsters. And पांच Musheer is करोड़ having दे a ball. 5 करोड़ दे तो दिए, बट यार कैप्टनसी और डिफेंसिव थी, थोड़ा कम दे देते. अच्छा नहीं, दूसरा एक चीज नहीं नहीं बट विनीत एक चीज देखोगे कि यार आपने फाइनल में आके कैप्टेंसी देखी है, आपने बाकी सीजन जो किया है, Exactly. क्या किया होगा, कमाल किया होगा तो क्या, वो भी एग्जैक्टली. एक पॉइंट देखो ना, आप फाइनल में आके जस्ट बिकॉज इट्स लाइव एंड लाइक आपने पूरा 5 दिन देख लिया है, तो आप उस पे एक एक बारीकी, बट अगर उसने एक्सेलेंट कैप्टेंसी की होगी, एक भी मिस्टेक एरर नहीं होगा, 99.99% के रिकॉर्ड से किया होगा, And तो also Taus bhai, unless also you completely follow it and then you are very a very great critic, आप इतना एनालाइज करते हो कि आपके पास आपको और कोई काम नहीं, आप सिर्फ क्रिकेट ही देखते हो, और आके फाइनल में अपने सारे मैचेस देखे, फाइनल में ही बोला यार ये बंदे में दम नहीं है, एंड कप्तानी ऑल्सो ताउस भाई, एक चीज नहीं और है होता ना, एक चीज और है, डिफेंसिव कैसे, आप अगर उस लाइनअप को देखें, उस 11 को देखें, सी द बैलेंस ही हैज मेड. आखिरी कॉल तो कैप्टन और कोच ही लेगा ना, वो 11 बना देगा. लुक एट द बैलेंस. आपको क्वार्टर फाइनल 10 और 11वें नंबर ने आके बैटिंग करके जिताया है, उसके बाद मुशीर खान विकेट ले रहा है. आई मीन जस्ट लुक एट द बैलेंस इन जनरल, आई एम सेइंग. तो वो कहीं ना कहीं कैप्टन को थोड़ा सा तो यार क्रेडिट दोगे ना. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, इतना क्रिटिकल होना जरूरी नहीं है, And बट वी also, नीड. इस बात में credit also should go to the Vidarbha batters also, no? The way they played. Karun Nair during his knock of 74 did not have a single scoring shot in the V. He was waiting on his back foot. A player like his caliber understands and assesses the condition. You have to give credit to that player as well, right? ऐसा तो नहीं है कि यार मुंबई है 500 मार दिए तो the other team has to get out at 120, 140. अगर एक इनिंग्स में 105 पे हो गए तो जरूरी थोड़ा है कि अगले इनिंग्स में भी 105, 110 पे ही आउट होना है. वो भी तो खेलने ही आए है ना. अच्छा, क्रेडिट आई थिंक वी शुड आल्सो गिव क्रेडिट टू दिस गाय, द कोच आविष्कार साल्वी, somebody who has not played first class cricket. ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो बिना फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इंडिया के लिए कोचिंग कर रहा है बंदा और वर्ल्ड टाइटल जीता है. ये बंदे ने रेलवेज में खेला है, ही इज प्लेड जस्ट वन डे डोमेस्टिक क्रिकेट और एक ही मैच खेला है सॉलिटरी, एंड ही इज अ ओल्डर ब्रदर ऑफ दिस हु elder brother of Avishkar Salvi, somebody who's played for Avishkar India, Salvi. fast bowler, one thing. Yeah, he was known as the Megra of domestic cricket. Action And he did bowl alongside McGrath for Delhi Daredevils in 2008 inaugural season also. Identical actions. Yeah. Okay, coming to Vidarbha's batting a bit, Vineet, I would like to ask you, बहुत बड़ा टारगेट था, still यहाँ तक आना. What do you make of this batting? Vidarbha's batting. Sorry, you are not audible. Hello. Vidarbha, am I audible now? Am I audible now? Hello. Am I audible now? Am I audible now? Taus bhai, am I audible now? Yeah, you're audible. I can hear you. Okay. Yeah, I can hear you now. But I was just asking about Vidarbha's batting, Vineet. What do you make of this? A very big total. फिर भी यहाँ तक आना, एक fight put up करना, especially on the last day. What do you make of this? Yeah, it was a very good performance, I thought. I mean, the fight back was good, and the fight back, I wouldn't say it was a fight back because the start was good. You look at the top three, and all of them got good starts. They beat Dhruv Shore. I mean, Dhruv Shore got a beautiful delivery from Kotian. They just exploded off the pitch. It was a very unlucky wicket for him. Mukhade also played 70 odd deliveries for 30. You look at that top four, and you could see that they were going for the win. It was not that they thought the game is over. So it was a very, very good start for them. The only disappointing factor was none of them were able to convert it, or none of them were able to really convert it the way Musheer was able to do. And you look at that second innings, it was Musheer and Shreyas Iyer. That was the two two players who were the key for Mumbai scoring 418. You needed somebody, a knock like that. Karun Nair 74. If it would have been 100, 120, add that to Wadkar's 102 or a Dubey, then it would have been a different ball game altogether. And somebody like an Aditya Sarwate, I thought
missed out in the sense Vidarbha missed out on Aditya Sarwate's batting because of the back spasm that he had. Backspin. Because he's also a very, very good, lower order batter. Again, I go back to that Delhi game where it was Sarwate and Wadkar who had combined to give Vidarbha the win. They batted well. So even till I thought that Sarwate है बीच में तो शायद ये थोड़ा और close लेकर आ सकते, but he was terribly, not really fit. You could see that. So again, good starts from each and every player. They just were not able to convert it. But on the other hand, I'll say that Vidarbha would be happy with the fact that you had two professionals, and Dhruv Shore playing his first season for Vidarbha. Karun Nair had already played it. They stepped up. Karun Nair ends as the highest run getter for Vidarbha. So it's really good. I mean, in the coming next season also, you would see this being a very, very good batting unit, so to speak. Taide also had a very, very good season. Yeah. Watkar will continue, and he's somebody who's a clutch player. Big matches में वो हमेशा करते हैं. But overall, looking at this game in itself, the game they lost it in the first innings itself. I thought 105 on that kind of a track after having Mumbai restricted Mumbai to 24. I think that is where the game happened, and I think Karun Nair also mentioned this before the start of day 5 that was probably the worst hour or worst innings that they played the entire season, and unfortunately for them it came in the final. So from there onwards they were just playing catch up. If this was this was a batting unit that should not have been wrapped up in under 105. So that is where I think they lost. But second innings they course corrected it, but the target was just too much for them to really put the pressure on Mumbai. True. ताऊजी आप कुछ कह रहे थे? Vidarbha को ही लेकर कर रहा था. What a fight they have put in. I mean, they had the confidence of the last two titles they had won not many years back. So I was expecting. I mean, हमारी बात भी हुई थी शायद प्रीव्यू के टाइम या फर्स्ट डे की यार कैसा होगा. तो also it was Mumbai's wicket where जहाँ पर फास्ट बॉलर्स का भी सही रहता है, टर्निंग ट्रैक भी अच्छा था, बॉल टर्न हुई, बल्लेबाजों के लिए भी अगर आप डटके खेले, अगर आप खड़ूस खेले, तो exactly Vidarbha played almost a खड़ूस cricket, but yeah, I mean 500 was too big a total to chase down यार. अगर थोड़ा सा भी छोटा होता 300 350, they would have easily gone on to beat Mumbai. But 500 किया, 500 के ऊपर तो गुंजाइश साइकोलॉजिकल एज भी हो जाता है ना, तो it becomes very very difficult. I mean you have to keep on grinding क्योंकि समय भी नहीं बचा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग तो आप गवा दिए, तो समय भी नहीं बचा आपके पास, तो आपको 500 चेज करना है, तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक, तो आपको ये रियलाइज एटलीस्ट ये हुआ है कि यार ये 5 दिन का मैच है. ऐसा नहीं कि दे हैव फोरफिटेड और गिवन अवे थ्रोन अवे द देयर विकेट्स और हम फर्स्ट इनिंग से कंसीड कर दिया डिफीट और हम विकेट फेंक के चले गए. दैट वाज द ब्यूटी ऑफ विदर्भा क्रिकेट दैट आई लव द मोस्ट कि यार उन्होंने गिव अप नहीं किया, एंड तक करते रहे. उनके कप्तान led by example. That was the beauty that I loved about this game, especially Vidarbha, and they had the confidence of the last two games, last two wins. And just to add to that, the score of 368 or whatever they ended with was their highest ever fourth innings total. तो वही जो ताउस बात कर रहे हैं कि फाइट तो दिया है, प्रेशर भी हैंडल किया. I mean they could have easily crumbled under the pressure of a Ranji final, going for a target of over 500, but they stuck to their guns, and eventually they lost, but ended up with their highest fourth innings total in a Ranji Trophy. So that speaks volumes of the fight they. No, at times this happen. No, you don't really have anything to lose, so let's give it a shot, kind of a thing. But then again, it was not a case where they were going hammer and tongs or जो होगा देखा जाएगा. They had plans. I mean, Harsh Dubey was very very smart in taking on the spinner Shams Mulani, Tanush Kotian को जहाँ ball को free दिखा, मतलब लगाए छक्के लगाए अच्छे खासे, अच्छे balls को respect किया. You would expect that from somebody like Wadkar and Karun Nair, but for somebody like Harsh Dubey to also do that and stitch that 110 run partnership was great. It eventually ended up being a very very good game, which I thought could be a drab or could be a dampener. Yeah, Chale, it was a good entertainer for the spectators, and many congratulations to Mumbai for the record extended win in this Ranji Trophy. Yeah, sorry.
Yeah, just last comment, and this is sort of a reply to the comments that we are getting, with regards to Ajinkya Rahane's captaincy. I just want to mention that Ajinkya Rahane again admitted after winning the Ranji Trophy that I am the happiest right now, despite me being the lowest run scorer for this team this year. Ups and downs are a part of a game, and I know that I have not performed well. So the thing that we started up with this only, that how more so Ajinkya Rahane came the pressers, and he admitted about the runs not coming from his bat even after winning the Ranji Trophy final. He mentioned that I didn't perform well, and I know that I'm the lowest run scorer for the side, but for me it's not about me, it's about the team, and I'm the happiest that this team has won, and all the credit goes to all the youngsters, especially the way Musheer Khan played. So the people who are talking about Ajinkya Rahane's captaincy, I think he also knows about the runs that he made this season, but I think at the end of the day, result is what all matters. I guess, I mean, I don't know why people are always. I respect to the views of our viewers, but क्यों? ठीक है यार, क्रेडिट देना चाहिए where it's due. That's fine. नहीं बने रन, नहीं बने, कोई बात नहीं. ये याद एक आओ. सवाल है मुझे आप तीनों से, आप डिफरेंट स्टेट से आते हो. रणजी ट्रॉफी इज लाइक एक क्रिकेट होता है, 4 दिन का 5 दिन का मैच होता है. आईपीएल अलग हो जाता है, T20 फॉर्मेट है, मगर जो लेगेसी है वो मतलब इतने सालों से चलते आ रहा है. तो हाउ डज इट फील टू सी मुंबई विनिंग 42nd टाइटल और टाइटल आफ्टर टाइटल? वो कैसा, मतलब बाकी स्टेट्स कैसा रिएक्ट करते हैं मुझे इंडिविजुअल व्यूअर्स, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं खेले तो हैं क्रिकेट, हम सब खेले हैं. मैं तो इसीलिए मैं कैप्टन स्पेसिफिक हो गया ना. मैं अजिंक्य रहाणे रणजी टाइटल जीते, that's what I wanted. That's it. लेगेसी समझने वाला समझ गए. लेगेसी देखो है ही है. And the Mumbai cricket, as you mentioned, I mean the lineage that Mumbai cricket has, the kind of players that they've produced, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्लेयर्स की वजह से ही वो इतने टाइटल्स जीते. देयर हैव बीन सो मेनी टाइटल विन्स वेयर दे डिडंट हैव दोस बिग प्लेयर्स एज वेल. Yet that mindset, that attitude comes through, and that comes through because they are inspired by what the others have done, what their seniors or what been in the past. I mean, वो एक बात होती है ना, when you get into that probably wanted dressing room, or you walk that, you see those big names, you see those big titles, that gives you that confidence, yeah. And in comparison to other states, there's no comparison at all. I mean, Soumya and me primarily come from Delhi, and we know that we are एक दिल्ली का एक जो 2016 में जो जीता था, ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही हो गया दिल्ली टीम को. But they are down in the dumps now, and there's a big strong Karnataka team also. They were winning left, right, center, everything. But वो एक phase था उनका. Mumbai during that phase were, in a way, they're also struggling. ऐसा भी time आया था कि Mumbai did not even make the knockouts also. But again, they have that system, right? I mean, from grassroots levels, Taus would be, you would be able to explain that better. The grassroots system, cricket खेलने का जो तरीका उस मुंबई में है, it's nowhere else in India, and that is what you see it from the grassroots level. उतना ही अच्छा अगर बनाया है, आपको हाईएस्ट लेवल पे वो रिवॉर्ड्स दिखेंगे ही दिखेंगे आपको. So Ramya, your take. See, Taus bhai, you are mute. Taus bhai, you are on mute. एक चीज जो मिसिंग है यहाँ से रणजी ट्रॉफी टाइटल में, वो है झारखंड का. यार वो रहता तो अलग ही मजा होता. मुझे एक मिस कर रहा है जो झारखंड का नाम होना चाहिए था यार कहीं तो. झारखंड is going to go into a very good transition phase. उनके जो अंडर 23 में लड़के हैं ना, वो दिखेंगे अब आपको, because 3 of the players have retired. मैं धोनी के इसको बोल रहा हूँ, बाकी तो क्या ठीक है यार. I'm talking about the Dhoni. If Dhoni had won that Ranji Trophy. अभी ठीक है ना. झारखंड का इतना जिक्र हुआ है हर लाइव शो पे, एंड फॉर ऑल द रीजंस दैट वी नो इतना जिक्र हुआ है. मुझे लगता है कि थोड़े कुछ टाइम में आपको देखने को जरूर मिलना चाहिए झारखंड का नाम भी, क्योंकि डिस्कशन बहुत हो रहा है झारखंड का, बट आई थिंक वो मिसिंग है वहां से. तो बट या आई थिंक सौम्य ने मुझसे पूछा था कि मुझे कैसा लग रहा है. यार सौम्य, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक वो जो एक नंबर है ना 42 जो वहां पे लिखा है, that creates all the difference. क्योंकि आप 42 देखिए and you see 8, कोई जो कैचअप कैसे होगा? हाँ, मैच ही नहीं है उस. सो
के बारे में डिस्कशन करके तो आई डोंट थिंक सो देयर बी एनी पॉइंट फॉर अस टू मेक, बिकॉज 42-8 nobody can even think of कोई कैसे वहां तक पहुंचेगा. So that's what it is, and Mumbai must be very very happy with this. I'll just add on to this, talking about the red ball cricket. Okay, so Faz Fazal, when he retired, I had a chat with him. उसने बहुत एक अच्छी सी बात बोली कि बॉस आई गॉट इमोशनल है, आई एम स्टिल इमोशनल. 3-4 दिन हो गए थे तब तक. लाइक व्हाई, कह रहा है यार मेरे फैमिली वाले भी पूछते हैं व्हाई आई एम स्टिल इमोशनल. तो वो जो रेड बॉल को पूरे इंडिया में खेलने का जो मजा है ना, कि आप ओपन करते हो, आप वो नए बॉल को फेस करते हो, अलग अलग कंडीशन में फेस करते हो, वो जो एक मजा आता है ना, वो अनमैचेबल है. सो आई गेस मुंबई क्रिकेट में वो चीज है, वो रेड बॉल क्रिकेट को इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं ना कि वो दिखता है. मैं एक पॉइंट I mean, Faz Fazal is from Vidarbha. Faz Fazal is from Vidarbha, but I'm just talking about the red ball cricket. हाँ नहीं, रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. मैं आई कीप हैविंग इंटरेक्शन विद यंगस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, मोस्टली जहाँ पे पॉपुलेशन यूपी, बिहार, कहीं दिल्ली या कहीं अलग अलग स्टेट्स में, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके पास टूर्नामेंट ज्यादा नहीं होते. बट आप देखिए जो लॉन्गर वर्जन है मल्टी डे टूर्नामेंट, मुंबई में बेहद है. मतलब आपका फाइनल जो होता है 3-3 दिन का होता है. आपको कॉर्पोरेट क्रिकेट भी होता है, मतलब ए बी डिवीजन 1.5 दिन के 2 दिन के फाइनल होते हैं. आपके क्लब टूर्नामेंट 4-4 मैच, 4-4 टूर्नामेंट से जो 1.5 दिन के होते हैं, 2-2 दिन के होते हैं. तो मल्टी डे टूर्नामेंट, और वो रेड बॉल से ही हो सकता है, व्हाइट बॉल से. तो टीम आपको, और जो आपका नॉर्मल 45 ओवर्स का टूर्नामेंट होते हैं वो भी रेड बॉल से ही होते हैं. अच्छा, वो T20 कल्चर धीरे धीरे क्रीप इन हो रहा है. बाय द वे, दैट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वो T20 कल्चर क्रीप इन हो रहा है. जो तो पिछले टूर्नामेंट से जो 45 ओवर्स के टूर्नामेंट, तो वो अभी T20 के हो गए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, टीम बढ़ गई है, नंबर ज्यादा आ गए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश भी थोड़ा ज्यादा हो रही है, और आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा. जो कांगलिक टूर्नामेंट होता था एक टाइम पे कि यार मैचेस होते थे, मतलब बारिश में भी होते थे, अब वो भी नहीं हो रहे. तो वो एक्सटेंडेड सीजन हो रहा है. तो चेंजेस काफी आए हैं मुंबई क्रिकेट में, और ये चेंजेस आपको स्ट्रगल में, परफॉर्मेंस में शायद मिले फ्यूचर में, मगर अभी भी जो बेसिक्स है वो इंटैक्ट है. अभी भी आपको हवा में भी बॉल ऐसा एरियल मारोगे तो वो भी एक क्राइम है. उसके बाद अभी भी वो प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल पे दौड़ना पड़ता है वो हवा में मारने के बाद. तो बेसिक वो एक वो सेंस है कि वो आपको अभी भी रखा है ट्रेडिशनल कोचेस ने. अच्छा, नए कोचेस नए माइंडसेट के साथ आएंगे तो वो भी बदलता जाएगा. तो बी रेडी टू सी चेंजेस इन रिजल्ट्स एज वेल एज. लेकिन ताउस भाई, जो एक बेसिक है वो रहेगा, वो रहेगा. जो बेसिक है ना वो रहेगा. बहुत कुछ उसमें मुझे नहीं लगता चेंज ज्यादा आएगा. इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, और एज आई सेड, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू मुंबई फॉर देयर 42nd टाइटल. और बहुत मजा आया ये मैच देखे, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग गेम था ये. सो एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन. दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे, और बहुत सारी कहानियों की, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.